इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूएस यानी अमेरिका नेपाल की हुकूमत पे और नेपाल की गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस कर रही है। चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में ज्यादा है, उसको कम करने के लिए यूएस इंडिया के साथ मिलकर नेपाल की सरकार को बदलने में और सरकार को खत्म करने में कोशिश कर रही है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि इंडिया अब नेपाल के अंदर करप्ट पॉलिटिशियन या लीडर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे और ना हम उनके साथ आगे काम करेंगे। और बोला यही जा रहा है कि भाई नेपाल के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियन मौजूद है जिनकी वजह से वो कभी चाइना और कभी दूसरे ममालिकों के पीछे जाते हैं। यूएस भी नेपाल के मुल्क के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले इनकी रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ बात करते हैं। The worry, Professor Saab, is not Nepal or Nepalese. The issue is never the Nepal or Nepalese. It's certain leaders, political entities who are influenced by the PLA and CCP, and what PLA, CCP or Chinese authorities and the Chinese entity machinations will be. How they will use Nepalese territory to not just further their economic interests, the BRI, but that becomes a strategic issue for us because they will also then be trying to push their troops closer to our borders, tacitly or overtly. Yuvraj Givire is with us, journalist from Nepal. Yuvraj ji, namaste. How would you see these developments? Thank you for your time. Ambassador Prabhudeval, I'll come to you after this for a rounder perspective. Yes, Yuvraj ji. Yes. If you are, if you are raising this issue in the context of recent change of government coalition and entry of the Communist Party of Nepal, Unified Marxist-Leninist, into the ruling coalition, what is true is China is the latest entry into Nepal in terms of enhancement in its presence, in economic investment. And naturally, when it's a larger economic investment and other interests, then domestic politics, any country would want domestic politics in its favor. So China, in that sense, it has emerged as a competitor with India, but it has come in a context when political change took place in Nepal way back in 2006. India took the lead role mobilizing international support, and obviously the Western countries, Western forces were part of it. So I think that made China more suspicious about India's position was always acceptable to China, it seems, but entry of the West, I think that made China suspicious. That caused to China's growing presence and economic investment in key areas. So it has led to this kind of situation, and it was very clearly known that the US and India were definitely not wanting the communist parties to come together and work together and rule together, but this happened since December 2022. Nepali Congress and Maoists had formed an alliance where they were ruling the country, but suddenly Prachanda decided to rope in UML. So this is seen as a defeat of the US and India coalition or convergence of their interest, and seen as a victory of China politically this round, but we really don't know how long. Ambassador Prabhudeval, would you like to weigh in before we take this forward? Yeah. Well, Anand, first of all, thanks for having me on your show. And you have very correctly, in your remarks, assessed the security and security-related aspects of the problem. Now, as you have pointed out, recent developments in Nepal have highlighted and heightened our concerns about the deepening penetration of China into the Nepalese government and society. There is no doubt that the new leftist regime in Nepal is close to China. Let me also mention that China was perhaps behind the formation of Nepal's new leftist coalition government. And it was behind the ouster of the Nepali Congress from the alliance with Nepal's Prime Minister, Mr. Prachanda. Now, what is likely to happen is that China will push
Nepal to join the BRI on its terms. Now, in fact, there are reports which suggest that Nepal will soon sign the BRI implementation plan with China. Nepal's Deputy Prime Minister, who's also the Foreign Minister, Narayan Shrestha, returned 3 days back from a trip to China, and he said after his return that the two countries have made progress in moving forward with the implementation plan of the BRI projects in Nepal. Now, the concern for us is that there is a likelihood of Nepal falling into the Chinese debt trap. This has happened in the case of Sri Lanka and also Pakistan. So, Chinese influence in Nepal will grow as Nepal finds itself deeper and deeper in China's debt. Now, of course, Nepal is trying to say that we should get grants and we don't want loans. But the latest indications are that they are prepared to settle for a combination of grants and loans. And you know what will happen then? The loans will become unrepayable. Nepal will find itself in the classic Chinese debt trap. And then China will use its influence in Nepal to target India. As it is, China is spreading a mischievous narrative that India supports corrupt politics in Nepal. Yes. And is trying to damage India's credibility in Nepal. So China's objective is to create an unfavorable environment for India and the region. And naturally, this is a cause of concern for us. India is, of course, committed to the all-out development in Nepal and will give financial assistance, lines of credit, and developmental cooperation. But the Chinese objective is different. They have India in mind when it comes to creating a hostile environment, and I'm afraid that their relationship with Nepal is progressing in that direction. No, but then को पता चल चुका हो कि भाई इंडिया ये कह रहा है कि हम जो है वो नेपाल के अंदर अगर इंटरफेयर करेंगे या नेपाल के अंदर काम करेंगे तो हम करप्ट पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना नेपाल को अपनी तरफ माइल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की बात कर रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है। हर तरीके से चाइना जो है वो नेपाल को अपनी तरफ करने में जो है लगा हुआ है और वो यही कोशिश कर रहा है कि नेपाल को किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाए या जो BRI प्रोजेक्ट का जाल है उसके अंदर फंसाए। कोशिश यही की जा रही है और ये कहा जा रहा है इंडिया की मीडिया की तरफ से, ये भी कहा जा रहा है कि यूएस भी नेपाल की गवर्नमेंट के अंदर और नेपाल के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब यूएस का तो कोई तुक नहीं बनता, हालांकि चाइना और इंडिया के बीच में ताल्लुकात खराब है तो उनका थोड़ा बहुत लग सकता है कि भाई वो लोग कर सकते हैं, बट इस दफा हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई चाइना के साथ जो है वो इंडिया और यूएस जो है वो अब नेपाल के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अब यूएस मुझे जहां तक लग रहा है वो चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया का साथ दे रहा होगा नेपाल में और वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा होगा। बहरहाल नेपाल के लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि भाई नेपाल के साथ चाइना का और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने में एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है अमेरिका, बट अगर नहीं अदा कर सकता तो फिर दोनों के बीच में ताल्लुकात काफी खराब होंगे। और वेल आप सबको मैंने गुड न्यूज ये भी दी थी कि नेपाल और चाइना का रेलवे लाइन काफी जल्द स्टार्ट होने वाला है और साथ में इंडिया और नेपाल का भी रेलवे लाइन काफी जल्द स्टार्ट होने वाला है। अगर ये खराब हालात जल्द ही ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो नेपाल और इंडिया के बीच में ताल्लुकात काफी बेहतर हो सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों ने देखी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।